Assalamualaikum students, welcome to the class. Today we'll study a poem from the literature section of your book, which is The Listeners, written by Walter de la Mare. It's actually one of the most popular poems and touches on many of the themes and content of which poet is remembered for. Means कि ये बहुत ही liked poem है by everyone. Listeners in actually the poem's title, as it signifies the mysterious inability of phantoms to not be able to communicate with the human world, actually, जो कि हमको पता ही we cannot communicate directly with these phantoms or ghosts. So here is the poem which defines that. So I'll recite the poem for you first and later we'll come to its explanation. Let's begin. Is there anybody there? Said the traveller, knocking on the moonlit door, and his horse in the silence champed the grasses of the forest's ferny floor, and a bird flew up out of the turret above the traveller's head, and he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? He said, but no one descended to the traveller. No head from the leaf-fringed sill leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still, but only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men, stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall, hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveller's call. And he felt in his heart their strangeness, their stillness, answering his cry, while his horse moved cropping the dark turf, 'neath the starred and leafy sky, for he suddenly smote on the door, even louder, and lifted his head. Tell them I came and no one answered, that I kept my word, he said. Never the least stir made the listeners, though every word he spoke fell echoing through the shadowness of the still house from the one man left awake. Ay, they heard his foot upon the stirrup and the sound of the iron on stone, and how the silence surged softly backward when the plunging hoofs were gone. This was the poem by Walter de la Mare, The Listeners. In this poem, actually, जो writer है, he uses the language to bring alive the eerie surroundings, जो creepiness होती है inside the haunted house in a forest. तो वही वो इसमें describe करना चाहता है. As a traveler is knocking at the door, it goes unanswered. क्योंकि he knew, he feels, it leaves him perplexed, confused, not knowing that he has left behind a horde of unmoved resident ghosts in the house. उसको ये पता नहीं होती है कि वो इस house में जो है, he is coming and he is meeting and he wants to convey his message to the ghosts. So the Walter tries to describe the action of a traveler, actually, who knocks on at the door of a seemingly deserted home at night. इसी से poem जो है वो begin होती है, वो start होती है with the speaker designing the traveler and his horse. They are at the door of a house on which the traveler is knocking. वो knock कर रहा होता है door पे and he is expecting to be greeted by someone. Obviously जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं and we obviously wanted to be greeted by someone, but no one answers his call. तो यहाँ पे जो है the narrative moves inside the house and where he feels a certain presence resides. वहाँ पे उसको लगता है कि कोई रहता है. But there are phantoms actually within the empty building and they listen well to the travelers, जो कि बहुत अच्छे से उसको सुन रहे होते हैं. And the traveler could feel that there is someone who is listening and who is feeling, and he is at the same time feeling it back. Actually, the traveler जो है वो sense करता है to some extent. He calls out a number of strange phrases that add to the mystery of the poem and then finally leaves without an answer.
And there are several interesting themes जो कि वॉल्टर ने इंक्लूड किया है इसमें, जैसे कि सुपर नेचुरल है, अननोन है, आइसोलेशन है, सॉलिट्यूड है. So actually this poem is mysterious poem which touches on all themes. और अगर हम बात broadly speaking if we say कि जो strangeness है वर्ल्ड की या ह्यूमन काइंड्स इनएबिलिटी है टू फुल्ली अंडरस्टैंड इट, तो वो डिस्क्राइब किया हुआ है. द पोएम इटसेल्फ इज़ अननोएबल, कि जिससे कि हम रीडर्स को भी पता नहीं चलता है दैट वी आर फार फ्रॉम रियल आइडेंटिटी ऑफ द लिसनर्स और व्हाट दे मीन एक्चुअली. सो the poem goes like he knocked on the door hoping against hope to get an expected response actually, but to his utter dismay the only listeners were a host of ghosts जो वहाँ पे थे उस haunted house में. तो जो मैसेज जो है ही अटेम्प्टेड टू पास ओवर द पर्सन इन द हाउस वाज ओनली रिवर्बरेटेड बैक, जो उस तक वापस पहुंचती है, बिकॉज ही कुडंट गेट द आंसर, उसे कोई जवाब नहीं मिलता है वहाँ से. बट उसको ये तसल्ली होती है कि ही हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, जो कि उसने देखा हुआ होता है. द साइलेंस दैट वेलकम्ड हिम वाज ओनली ब्रोकन विद द प्लंजिंग हूफ्स ऑफ द ट्रैवलर्स हॉर्स एज ही रिट्रीटेड, जब वो वापस निकलता है. सो जो तो ये लोनली ट्रैवलर होता है, जब ये हॉर्स के बैक पर एक सुनसान से मकान में पहुंचता है जो कि फॉरेस्ट के बीचों बीच होता है, टू डिलीवर ए मैसेज एक्चुअली, ही वॉज ग्रीटेड बाय अ बर्ड विच फ्लू आउट ऑफ द टर्नेट अबाउ हिज हेड, जो कि ऊपर उसके सर से गुजरती है. व्हेन ही नॉक्ड ऑन द डोर देयर वॉज अ टिंज ऑफ यूरिनेस, फ्राइटनिंग सी एक फीलिंग थी, एक स्ट्रेंज सी अलग सी फीलिंग थी. And the second time he knocked louder and shouted to find out if there was anybody in. But nobody came up and answered to the door or the window, whose sill was leafy. मतलब वो ऐसे ही लगता है कि सुनसान जब होता है कोई मकान, तो उसके जो खिड़कियाँ होती हैं उन पर पत्ते इतने सारे पड़े होते हैं कि जैसे किसी ने उनकी न सफाई की हो, ना उनको कभी हिलाया है खिड़की खोलने के लिए. सो इट लुक्स लाइक दैट, जो हमें जो वॉल्टर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है थ्रू हिज वर्ड्स. और ट्रैवलर जो है वो पजल हो गया एंड रिमेन्ड मोशनलेस, वो हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि दैट देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ गोस्ट्स. उसको ये फीलिंग आ रही थी दैट दे वर लिसनिंग टू द ह्यूमन वॉइस. दे स्टूड इन अ बॉडी in the faint moonlight on the dark stair leading to the empty hall, जो कि वहाँ से गुजार रहा था और हमको एक हॉल तक पहुँचा रहा था. So it was a starry night and thick bow hung over. हमें बता रहा है कि यहाँ पे वॉल्टर किस टाइप की सिचुएशन थी, जो सराउंडिंग्स थी वो कैसी थी. It was all haunted. So he smote on the door and shouted even louder. इस बारी उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ देने की कोशिश की. But once again he had kept his word. Every word he spoke echoed through the still house. So the sound of his foot upon the stirrup and the clank of the horse's hoof on the stone with the retreating hoofs leaving behind the listeners. फिर ये उसको लग रहा था कि मतलब किस टाइप की सिचुएशन थी. तो ट्रैवलर को पता थी कि दैट ही इज़ द ओनली लिविंग पर्सन अराउंड. उसको ये पता थी कि मैं जो भी यहाँ पे आवाज़ कर रहा हूँ तो वो अंदर कोई नहीं सुन रहा है, एक्सेप्ट कि वहाँ पे जो फैंटम्स हैं वो सुन रहे हैं. एंड द फैंटम लिसनर्स हेयर हिम. उसको ये महसूस हो रहा था. जंप अप टू onto its horse and then sound of the horseshoes on the stone path as the traveler resides horseshoes. So rides away. The silence of the forest जो है quickly returns as the sound of the horse's forceful riding fades away. जब वो भाग रहे थे, जा रहे थे. तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो ये पोएम है, इन मैनी वेज इट डिफाइज द इंटरप्रिटेशन प्रिसाइजली, क्योंकि इसमें हमको पता नहीं चलता. इट्स अबाउट द नोन एंड अननोन, अननोएबल एंड अननोएबल अननोन. सो वट मतलब इसमें एक पैराडॉक्स है कि जो लिसनर है दैट एक्नॉलेज पीपल्स desire to seek understanding while also asserting a certain unsurmountable mystery of the world around them. मतलब जो वो mystery जो वो महसूस कर सकते हैं, feel कर सकते हैं around them. तो it regardless of how hard they look, the poem suggests that people cannot always find the answers they seek. मतलब जो कुछ भी वो चाहते हैं कि हमें आंसर मिले, जवाब मिले हमारे सवालों को, वो नहीं
जान पाते हैं. So this becomes the subject of the poem, that traveler जो है, that when he arrives to the house in the woods clearly in search of something, जो कि मतलब स्पेसिफाई नहीं किया है पोएम में, he repeatedly knocks on the door to ask if anybody is there and seems increasingly agitated by the lack of response. जब उसको वहाँ पे उस घर से वो response नहीं मिलता है तो वो agitate होता है, तंग होता है. That his second knock is described जो है वो किया है इन्होंने using the word smote. तो स्मोट से किया हुआ है सजेस्ट, जो कि कर रहा है सेंस ऑफ अर्जेंसी. मतलब वो चाहता है कि उसकी जो कॉल का है वो जवाब मिले. हिज इनिशियल कॉल हैविंग गॉट अनआंसर्ड, इंडीड द थर्ड टाइम जब उसने कॉल किया तो ही स्मोट ऑन द डोर इवन लाउडर एंड लिफ्टेड हिज हेड. और उसको फर्दर डिस्क्राइब किया है कन्फ्यूजन से. परप्लेक्स्ड इज द वर्ड यूज्ड एंड व्यूज द साइलेंट लैंडस्केप as filled with strangeness. So this all illustrates his confusion about the situation in which he was caught, he was found himself, and reflects the air of the mystery that pervades the poem in general. तो जो इसमें important चीज़ है वो creepiness है poem की, which comes from the traveler and the reader, because who doesn't know what does or what does not reside beside the door. जो कि जिस दरवाजे पे वो नॉक कर रहा है कंटिन्यूसली, उसको पता नहीं होता है कि ऑन द अदर साइड है क्या. सो इट्स अ कॉन्सीट दैट लिंक्स द अननोन विद एंग्जाइटी एंड फेयर. सो देर आर सम वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम लाइक मूनलिट. द डोर इज मूनलिट. इसका मतलब ये है कि दैट इट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून, जिसको कि लिटरेचर में हम रिलेट करते हैं सुपर नेचुरल के साथ. या फॉरेस्ट फ्लोर जो है वो फर्नी है, विच सजेस्ट दैट नो वन हैज़ वॉक देयर फॉर सम टाइम. या विंडो सिल पे जो हैं वो पत्ते हैं, तो इसका मतलब है कि उसको बहुत टाइम से किसी ने खोला नहीं है. सो दीज ऑल वर्ड्स डिपिक्ट समथिंग इन द पोएम दैट इज़ वेरी हॉन्टेड. सो इसका कंक्लूजन ही है पोएम का कि इट ऑफर्स नो कैथरसिस. इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द सेंस ऑफ अननोएबिलिटी, क्योंकि इसकी वजह से जो सब्जेक्ट है वो डिस्टर्ब हो रहा है. सो उसके जो आंसर्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं. जो क्वेश्चंस वो पोज कर रहा है और जो आंसर वो चाहता है वो नहीं हो रहा है. सो ओवरऑल इट्स बेस्ड ऑन अननोन एंड unknowability. So I hope you enjoyed the poem. See you in the next class. Till then, Assalamu alaikum.